जैसा हमने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सीपेज वेलोसिटी है. सो दिस इज अ डिफरेंट meaning of a seepage here. Seepage means, seeping means what here, leakage. Seeps means what here, leak out, and the quantity that has seeped out. Okay, so this is a definition. Seepage velocity is the velocity of a groundwater calculated from a Darcy law. Seepage velocity is not the actual velocity of the water in the pores, but the apparent velocity through the bulk of the porous medium. Actual velocity is higher than the seepage velocity by a factor, which combine the effect of the porosity and tortuosity of the actual flow path among and around the mineral grains. So with this figure, we can easily understand seepage velocity and the discharge velocity. This is a represent what here, discharge velocity. This figure is represent the discharge velocity, and this figure is represent what here, seepage velocity. Okay, so this is a here pore, this is a pore here, this is a pore here. So यहाँ पे ये जो पानी है यहाँ से होकर निकल रहा है, this is a here, this is a what here, seepage velocity. And this is a another definition, this is a percolation or a seepage here. So the rainwater after falling on the earth surface, some part of it seeps through the soil and meets the groundwater. The process is called the percolation. Is the flow of water under gravitational force in a permeable medium. So what is the discharge velocity? The discharge of a water per unit of a total mass section area capital A of a soil is known as a discharge velocity. We have already discussed these things in a yesterday class. So how to calculate seepage velocity? So the velocity of a water through pores is called seepage velocity Vs here. As the flow is continuous, discharge capital Q must be the same throughout the system. So Q is equal to what here? Area into volume. Discharge is equal to what here? Area into volume here. So we can express this expression as a as here, what here? A, this is a void here, area of a void, into what here? This is a what here? Volume of a seepage. Sorry, velocity of a seepage. So where A is equal to what here? Total cross-sectional area. AV is equal to area of voids in the total cross-sectional area here. So this expression can be expressed as a here, capital V is equal to AB by A into Vs here. So, but we know that the porosity of a soil is given by N is equal to volume of void divided by total volume. So volume of void is equal to, this is what here, we can express volume of void here, AB here, and the total volume, capital A here. And since here N is equal to AB by here, A here, so we can express here, this is a N here, this is a N here. So this expression can be expressed as a capital V is equal to N into Vs here. Now, so Vs is equal to what here? Capital V by N here. As porosity N range between what here? N should be greater than 0 and less than N here. So we can express this expression as a here, this expression as a here, what here? Or this expression V by Bs is equal to N here. So V by Bs, what is the here? Less than 1 here. So that's mean what here? V by Bs less than 1 here. Okay. Or we can express this expression as a V is a less than what here? Vs here. Or we can say that Vs is a greater than V here. So seepage velocity is always greater than the discharge velocity. We have already discussed these things in yesterday class. So equation of a continuity. Equation of a continuity here. In a fluid dynamics, the continuity equation states that the rate at which mass enter a system is equal to the rate at which mass leaves the system plus the accumulation of mass within the system. So this means here कि जितना पानी जो है पाइप के अंदर जा रहा है, जितना पानी पाइप के अंदर है
और जितना पानी जो है वो पाइप के बाहर जा रहा है, ठीक है। सो ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि द रेट at which mass enter a system is equal to the rate at which mass leaves the system plus the accumulation of mass within a system here, ठीक है। सो पानी के जो है इंटर करने का जो है वो प्लस पानी, जितना पानी बाहर निकल रहा है वो, और जितना पानी जो है पाइप के अंदर है वो, ठीक है। सो वो क्या बताता है हमारा इक्वेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस। So differential form of continuity equation, vector form. So how will you calculate vector form? So we suppose here, let capital S be the surface enclosing the volume V and del S be the small elementary area. And PR is a point in a del S here, and rho RT is the density at a PR, and small n is the unit normal to the surface. Small q is the velocity of a fluid at PR. Then component of velocity along the normal is equal to n dot q here. So with the figure, we can easily understand. So this is a what here? S here. This is a S here. This is a S, and this is a surface enclosing a volume V. This is enclosing volume V, and del S be a small. This is a del S. This is a here. Del S be a small. Elementary area, this is elementary area, this is elementary area. PR is a point in a del S, तो इस del S में एक पॉइंट ये PR है, and rho RT is the density at a PR, तो PR पे जो density है वो क्या है, rho RT है. N is the unit normal to the surface, N is the unit normal to the surface. Q is the velocity of a fluid at a PR, तो जो इस पॉइंट PR पर जो है वो फ्लूइड की वेलोसिटी है. Then component of velocity along the normal here, so then component of velocity along the normal, this is the form here, n dot q here. Now, so the rate of mass across, we know this formula, del S is equal to density into velocity into area. So density into what here, this is the what here, rho here, area into what here, del S here, and velocity what here, n dot q here. Okay, now here. So total area of a flow through S, we can express here integration over S, rho here, n dot q ds. So by now, Gauss divergence theorem, integration over S, rho n dot q ds is equal to what here, integration over V, rho here, del dot q dv here, or we can express this expression as a integration over V del dot rho q dv here. So total rate of mass flow into V, this is the actual value for a total rate of mass flow into V, minus here integration over V here, del dot here, rho q dv here, this is equation number 2 here. And the mass of fluid within V, जो mass of fluid है वो V के अंदर साथ में and V के लिए, ओके, दोनों के लिए. So यहाँ पर क्या होगा, integration over V rho dv here. So the rate of change of mass of fluid within V. So rate of change आपको पता है, rate of change की जहां पे बात चलती है वहां पर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है. सो हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट किया. सो वी गेट दिस फॉर्म इज द हियर डेभा टी ऑफ हियर इंटीग्रेशन ओवर वी रो डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर वी डेभा टी ऑफ रो डीवी है. तो रेट ऑफ चेंज की बात कहीं पर भी चलती है, इसका मतलब कि जो दिया हुआ फंक्शन है उस फंक्शन को हमेशा हम टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है. जब दिए हुए फंक्शन को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें रेट ऑफ चेंज मिल जाता है. तो यहाँ पर जो फ्लूइड विद इन वी है उसका रेट ऑफ चेंज प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है उस इक्वेशन नंबर 3 को हम टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे. सो then by the law of conservation of mass we have formed from equation 3 and 2, from equation 3 and from equation 2
this is here integration over v debha rho debha t dv is equal to minus here integration over v del here dot rho q dv here. But with a simple calculation, we can calculate this expression and we arrive here integration over v del rho del t here plus integration over v del dot rho dot q here dv is equal to 0. And we can express here this expression because dv is a common from both integral form here, integration here. So we can express this expression debha rho debha t here plus here del dot rho q here dv is equal to 0 here. So, but this dv never can be 0 here. So which part will be 0 here? This one here. Debha rho debha t plus del dot here rho q will be 0 here. So this is a equation form. So we can express this this expression as a debha rho debha t plus here del dot rho q is equal to 0. So this is equation number 4 here. So this is a equation of continuity by Euler's method. So you have remember these things. So आपको ये चीजें याद रखना. Equation of a continuity by Euler's method debha rho debha t plus here del dot rho q is equal to 0 here. Now note यहाँ पर एक important है. So when the fluid in a incompressible and motion is steady, the density rho is constant. So what will you get here? Debha rho of debha t is equal to 0. Then rho debha dot q is equal to 0, but here rho not equal to 0 here. Okay. When again I'm saying when the fluid in incompressible and motion is steady, the density rho is constant. So density rho is constant. So if you differentiate rho with respect to t, so you will be get value equal to 0 here. Because density rho is constant, तो rho के रिस्पेक्ट में यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 के बराबर आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं डेंसिटी रो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो गई, वो 0 हो गई. तो जब यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, सो यहाँ पर हमें क्या मिला इक्वेशन 4 में आपको क्या मिलेगा डेल डॉट रो क्यू इज इक्वल टू 0. बट हियर यहां पर भी जो रो है वो 0 के बराबर नहीं होगा. ओके, सो यहां पर फिर क्या 0 होगा, डेल डॉट क्यू क्या होगा इक्वल टू 0 के बराबर होगा. ओके, रो इज द कांस्टेंट बट डेंसिटी यहां पे 0 नहीं है. ओके, डेंसिटी 0 नहीं हो सकती. जो डेंसिटी समझ रहे हैं ना, दैट्स मीन जो वाटर डेंसिटी है वो 0 नहीं हो सकती. तो इसीलिए यहाँ पर जो वाटर की जो डेंसिटी है उसको हम लोग यहाँ पे 0 के बराबर कंसीडर नहीं कर सकते. तो जब वाटर ऑफ डेंसिटी यहाँ पर हम 0 के बराबर कंसीडर नहीं कर सकते तो फिर हम किसको 0 मानेंगे. तो यहाँ पर ये जो पार्ट ये कोफिशिएंट है, दिस इज अ डेल डॉट क्यू, इसको हम लोग 0 के बराबर मानेंगे. नाउ सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ हियर आई, this is a here operator form here. So this here I debha of debha x plus j debha of debha y plus here k plus k here debha of debha z into what here q is equal to what here ui plus bj plus zk is equal to 0 here. Wk is equal to 0 here. Sorry, this is a w here, k is equal to 0 here. So using the divergence form here, so what will you get here, debha u of debha x plus debha b of debha y plus debha w of debha z is equal to 0. So this is equation of continuity for incompressible fluid here. So यहाँ पर incompressible fluid के लिए जो equation of continuity होगा वो क्या होगा, debha debha x of u plus debha debha y of b plus debha debha w of debha debha z w is equal to 0 here. Now so equation 4 can be written as a here, this is equation number 4. again यहां पर जो equation 4 है उसको हम लोग इस ढंग से एक्सप्रेस करेंगे. equation 4 can be written as a here debha rho of debha t plus here rho into this is a what here del dot rho plus del rho dot what here q here. okay, यहां पर equation 4 उसको हम लोग क्या लिखेंगे, debha rho of debha t plus here rho del dot q plus del rho dot q is equal to 0 here. This expression equation 4 again मैं दिखाता हूं यहां पर आपको.
this expression here. Okay, we can be expressed as a here this here form. This is divergence form here. So but here we know that this is a, ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. d rho of dt is equal to, this is a what here, partial differentiation of rho with respect to t, plus here this is what here rho here del dot q here. So ये वैल्यू होती है किसके बराबर, कैपिटल D ऑफ कैपिटल dt ऑफ रो के. सो यहां पर ये वैल्यू हम रखेंगे, ये वैल्यू यहां पर, ये वैल्यू यहां पर रखेंगे हम. ठीक है, सो हमें क्या मिल गया, this, so this expression can be expressed as a here d rho of dt plus rho here del dot q is equal to 0 here. So now this expression divided by rho here, so if you divide this expression rho here, so what will you get here, 1 by rho here d rho of dt plus here del dot q is equal to 0, and this expression can be expressed as a here d of dt log rho here. This is a del dot what here, rho is equal to 0 here. Okay, this term is here. So now here first function differentiation of second, you can express this expression as a, so if you differentiate here, so you'll be get this expression here. यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस इज मिसिंग हियर. सो प्लीज आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, वो लिखने में मुझसे छूट गया है. सो प्लीज आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. नाउ सो if your del dot q is equal to 0 or a divergence q is equal to 0, so for incompressible fluid this q is called a solenoidal vector. Okay, ये आपको वेक्टर में आपने पढ़ा ही होगा कि जब डाइवर्जेंस v is equal to 0 होता है तो उसको हम सोलिनॉइडल वेक्टर कहते हैं. ठीक है, सो यहां पर ये del dot q और डाइवर्जेंस q की वैल्यू यदि 0 के बराबर हो जाती है तो फॉर किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, सो दिस q इज कॉल्ड व्हाट हियर, सोलिनॉइडल वेक्टर. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलिनॉइडल वेक्टर कहते हैं. सो नंबर 4, let the motion be irrotational and incompressible, so then there exists velocity potential phi here. यदि हमारा मोशन क्या है, वो irrotational है और incompressible है, then there exists a velocity potential phi, और उसको हम लोग क्या लिखेंगे, q को, q is equal to what here, minus del phi here. Okay, so from equation of a continuity for steady and incompressible आपने अभी पढ़ा है. So del dot q is equal to 0 here. So equation of quantity for steady and incompressible क्या होता है, del dot q is equal to 0. So from equation first and second we can express here this expression from equation first and second here. So q is equal to minus del phi here. So now यहाँ पर इसको हमने वैल्यू रख दिया, यहाँ पर क्या हो गया, del dot minus del phi is equal to 0 here. Okay, so this implies that we can express this expression as a what here, nebula square or a del square phi is equal to 0 here. Okay, or we can express this expression as a here, this is an operator form, so we can express this operator as a deva 2 deva x2 phi here plus deva 2 phi of deva y2 plus deva 2 deva z2 phi is equal to 0 here. So this is the equation of continuity in this case here. So this represent what here, equation of a continuity when the motion is be irrotational and incompressible. Okay, so now this is what here, equation of a continuity in a Cartesian coordinate. So how will you calculate equation of a continuity in a Cartesian coordinate here? So Cartesian coordinates में equation of a continuity को calculate करने के लिए यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखिएगा. Let 3 point be here. So हमने यहाँ पर ये एक 3 dimensional एक प्रकार से कह सकते हैं क्यूब टाइप का हमने लिया हुआ है. So यहाँ पर लिखा है let 3 point p xyz in a fluid and rho be the density of a fluid there. Okay, so यहाँ पर हम एक point p मानते हैं, p xyz here, this is a p here, this is a p here, xyz here. Okay, now and rho be the density of a fluid. तो यहाँ पर जो fluid है उसकी density कितनी है, rho है. Also let u be w be the velocity component at p parallel to x-axis. That's mean x के along u velocity, y के along v velocity and z के along w velocity.
So with this figure, we can easily understand equation of a continuity for a Cartesian coordinate. So now mass of fluid that pass in through the plane phase here, PABC. So PABC was what here? PABC is the here. This is the what here? PABC. यदि फ्लूइड यहां से पास होता है, यहां से पास होता है, ठीक है, यदि फ्लूइड यहां से पास होता है, ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा? इफ द फ्लूइड जो है यदि वो पास कहां से हो? PABC से, सो वहां पर आपको क्या मिलेगा? यू कैन सी, यहां पर आप देखेंगे, सो नाउ द मास ऑफ फ्लूइड दैट पासिंग थ्रू द प्लेन फेज PABC, वो क्या होगा? रो into what here? Del y into del z, u here in unit time. Okay, this is a, so यहाँ पर ये फॉर्म क्या होगा? This is your form, del y into del z. This is the area here, this is the area here, del y into del z here, and this is what here? यहाँ पर ये फॉर्म क्या हो गया? Rho density into this is the area, del y into del z here. Okay, into density. So u here in the velocity क्या है? U के along, the x के along, this is a u here. Okay, so area into density, this is a what here, and velocity. अभी फॉर्मूला लिखा था ना हमने यहां पेज में, क्या लिखा था हमने? डेंसिटी इंटू वॉट हियर एरिया इंटू वॉट हियर वेलोसिटी। सो यही हमारा है डेंसिटी, दिस इज द एरिया, एंड दिस इज वॉट हियर वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। सो वेयर del y into del z is the area of the cross section and u as the velocity with which the fluid क्रॉस द दिस फेस हियर। सो यहां पर ये जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन क्या होगा? यहां पर ये फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, इज द व्हाट हियर? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यहां पर हम सपोज करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हियर। ओके, सो यहां पर जो ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हियर, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, the velocity with which the fluid cross this face here, तो उसको हमने क्या मान लिया? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, उसको से कहते हैं। नाउ मास ऑफ फ्लूइड दैट पासेस आउट थ्रू द प्लेन QA dash B dash and C dash here. Okay, so QAB, this is a here, यहां से फ्लूइड यहां आ रहा है और यहां से ये फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो QA dash B dash and C dash here. So यहां पर क्या होगा? यदि फ्लूइड यहां से बाहर आ रहा है, सो यहां पर हमें क्या मिला? दिस ईयर फॉर्म। तो यहां पर फंक्शन क्या होगा? यदि यहां पर फंक्शन जो है, यहां पे देखिए, दिस इज अ हियर, यहां पर फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, और यहां पर आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके लॉन्ग हो रहा है? एक्स के लॉन्ग, ठीक है। सो फंक्शन में हम किसको डिस्प्लेस करेंगे? दिस इज हियर एक्स को, सो यहां पर एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। तो यहां पर ये फॉर्म क्या हो गया? So Q A prime B prime C prime C prime here, or you can say that Q here A dash B dash C dash is equal to what here? F here x plus del x here comma y comma z here. Okay. So expanding by the Taylor's theorem, we are using the here Taylor's theorem form here. So what is the Taylor's theorem? Taylor's theorem आपको पता ही, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, function of x y z plus here del x here function of x y z plus dash 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 here. So therefore the axis of the flow in overflow out here. So what is the, so यहां पर क्या करेंगे? mass that enters in a through PABC and mass minus here mass that here leaves through QA dash B dash and C dash here. Okay, so axis of a flow, how will you, कि जितना पानी यहां अंदर आया और जितना पानी यहां से बाहर जा रहा है, उसको कैसे हमने कैलकुलेट किया? तो यहां पर हमने मास दैट इंटर इन अ थ्रो PABC जो था, उसमें से हमने मास दैट लीव्स थ्रो हियर QA डैश B डैश और C डैश हियर, उसको हमने घटा दिया, ठीक है। सो यहां पर हमें पता लग जाएगा कि एक्सिस ऑफ अ फ्लो इन ओवरफ्लो आउट हियर। ओके, सो यहां पर आप इसको घटाएंगे तो यहां पर क्या है? मास दैट इंटर्स इन द थ्रो PABC, वो क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, और मास दैट लीव्स थ्रू QA डैश B डैश C डैश, वो क्या है?
this function of xyz, del x here, del y here, del x here, function of xyz here. तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये फंक्शन ऑफ xyz, ये फंक्शन ऑफ xyz दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, del x here minus del x here, del x here, function of xyz. Okay, to the first order of approximation. Now, so function of xyz, we know that here, minus del x here, we have already said that here, this is a function of xyz here, this is a rho here, u here, del y into del z here. So from equation first here, we have already calculated value of a function of xyz in a previous pages. This is a here, this is a function of xyz. Okay, so this can be say here function of a xyz here. Okay, so यहाँ पर ये फॉर्म क्या हो गया हमारा, function of xyz here, rho u, del y and del z from first here. So we can express here minus del x, del y and del z is equal to, if you differentiate here, this here de bar rho u here. So यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, और we can express this expression as a simply here, कि यहाँ पर आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, minus del x here, del y into del z here, and you can express this expression as a here, de by x here, rho u here. So as x, y, z are independent variable and rho u, v, w are their functions. So similarly, the axis of a flow out from POC dash C and AA dash B here. So यहाँ पर क्या है, POC dash C, see in a figure. This is here, okay, this portion, okay. So in this portion में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वही बात कर रहे हैं वो. Similarly, so axis the flow out from faces what here, POC dash C and AA dash B here. So if you calculate here these two here values, so you'll be get here minus del y here, rho here, v here, del x, del z here, or you can express this expression as a here minus del x, del y, del z here, de bha y here, or a del y here, rho v here. Okay, now somebody's pronounced this is a del, or somebody's pronounced as a de bha here. Okay, now so similarly the axis of a flow flow out from the PQA dash A and CCB B here. C dash B here. So again, see in a figure here, and so PQA dash क्या, A dash A क्या है, so PQA dash A here, this is a here, and यहाँ पर next इसका part क्या है, flow in में this is a here, this is a flow in में क्या है, C dash B dash B है. So C dash B dash here, तो C dash B dash here. Okay, this is here. So यहाँ पर हमें flow in and flow out calculate करना है इस phase और इस phase को लेकर. So if you calculate here flow in and flow out for this expression here, so you'll be get here minus del z here, del z here, rho w, del y, del x here, or you can express this expression as a here del x, or you can express this expression as a here minus del x here, minus del x, del y, del z here, or you can express this expression as a de bha z of rho w here. So again, the total mass in the parallelepiped is equal to what here, आप इनको टोटल मास समझ रहे हैं, दैट्स हियर. सो ये क्या होगा, रो del x and del y and del z here, total mass, just you add all these things here. So hence increasing in the mass of the parallelepiped in the unit time here. So that's mean here कि जो टोटल मास है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. So you'll be get here del x, del y, del z here, deba rho of deba t, or a del rho or a del t. Somebody is pronounced here this is a deba, or somebody is pronounced a del here. So now
the increase in the mass is equal to what here? Total axis of a flow in overflow out from all the faces here. So you can easily see that. So del x, del y, del z, del rho t is equal to what here? मैंने पहले भी बोला कि इन सबको आपस में ऐड कर देना है. So you'll be get here minus del x, del y, del z here. This expression del x rho u plus del y here rho v plus del z here rho w. Okay, or you can express this expression as a here. यहां से ये दोनों लेफ्ट और राइट में दोनों कैंसिल हो गए. हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगा? दिस एक्सप्रेशन, दिस माइनस यहां आ जाएगा वो. सो इसको हम लिखेंगे del t of rho plus del x here rho u plus del y of rho b plus del z here rho w is equal to 0 here. Okay, so this is a what here? Equation of a continuity for a Cartesian coordinates here. So now this is a topic related to the equation of a continuity and seepage here. Okay, so आज ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं.